અને મુખ્યમંત્રીએ પાઘડી પહેરાવા જતા હતા તો મેં કહ્યું તમે આના ઉપર જ મૂકો, મારે આ પાઘડી ઉતારાય એવું નથી. હું આવતા રસ્તામાં જામ સાહેબના દર્શન કરવા ગયો હતો. અને મારું સૌભાગ્ય છે કે મારા ઉપર એમનો ખૂબ અનન્ય પ્રેમ રહ્યો છે. સમગ્ર પરિવારનો અનન્ય પ્રેમ રહ્યો છે. અને જામ સાહેબ પાઘડી પહેરાવે પછી તો કઈ બાકી જ ના રે ભાઈ. અને એટલે મેં કહ્યું મારે માટે તો જામ સાહેબની આ પાઘડી મોટો પ્રસાદ છે. અને જામનગર સાથેનો મારા નાતાની અનેક વિશેષતાઓ રહેલી છે. ગયા 2 દિવસથી હું ગુજરાતમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છું. આમ તો કઈ ગુજરાતમાં વોટ માંગવા ના આવવાનું હોય. મને ઘણા કહેતા હતા કે સાહેબ તમારે ક્યાં પ્રચારમાં આવવાની જરૂર છે. મેં કહ્યું ભાઈ પ્રચારમાં ને પ્રેમમાં બહુ ફરક હોય. હું પ્રચાર માટે નથી આવ્યો, હું તો પ્રેમનો આસ્વાદ લેવા આવું છું. ગુજરાતની ધરતીએ જે પ્રેમ આપ્યો છે, જે આશીર્વાદ આપ્યા છે, એ તો મોટી મૂડી છે. અને આજે જયારે જામનગર આવ્યો છું ત્યારે અનેક જૂની વાતો તાજી થાય. કારણ કે સંગઠનનું કામ કરતો ત્યારે પણ આવતો. પણ એક વાર બહુ મહત્વની ઘટના બની. બુચ્ચર મોરીની યુદ્ધની વાત. અને મને આપણા ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો નિમંત્રણ આપવા આવ્યા. પછી મને કોઈએ કાનમાં કહ્યું, મને કે સાહેબ અમે નિમંત્રણ આપવા આવ્યા છે પણ તમે નહીં આવો, પણ આ તો અમારું કર્તવ્ય છે એટલે અમે આવ્યા છીએ. કેમ નહીં આવો? મને કે સાહેબ કોઈ મુખ્યમંત્રી ના આવે. કેમ ના આવે? કે અમે બધા મુખ્યમંત્રી ટ્રાય કર્યો છે. તો થયું શું? તો કે સાહેબ ત્યાં એવી માન્યતા છે કે જ્યાં આટલા બધા વીરોએ શહીદ થયા, જેમના પાળિયા ત્યાં દેખાતા હોય, પૂજાતા હોય, પણ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીઓના કાનમાં કોકે ભેળવી દીધું છે કે તમે આ બુચ્ચર મોરીના એમાં જાઓ તો તમે મુખ્યમંત્રી પદ તમારું જતું રહે. અને એટલા માટે એકે મુખ્યમંત્રી આવતા નહોતા. મેં કહ્યું કે મારા ક્ષત્રિય સમાજના આ બલિદાન સામે આ મારા મુખ્યમંત્રી પદની કોઈ કિંમત નથી. હું આવીશ અને હું આવ્યો અને ખૂબ ઠાઠથી એક કાર્યક્રમને મેં વધાવ્યો પણ ખરો અને એને વધાર્યો પણ ખરો. એટલે જામનગર સાથેની મારી એવી અનેક યાદો સાથે આજે ફરી જ્યારે જામનગર આવ્યો છું ત્યારે અનેક વાતો કરવાનું મૂડ છે. જ્યાં જ્યાં હું ગયો છું અપાર આશીર્વાદ, અભૂતપૂર્વ ઉત્સાહ અને ઉમંગના મેં દર્શન કર્યા છે. અને આ વખતે હિન્દુસ્તાનમાં જ્યાં જ્યાં ગયો, 2014ની ચૂંટણીમાં પણ ગયો તો भाई ये जो तस्वीर लेके खड़े हैं ना, कृपा करके आप बैठिए. आप जो लाए मैंने दर्शन कर लिए. प्लीज आप पीछे परेशान करते हैं लोगों को. प्लीज आप बैठिए. आप जो लाए वहां लेकर के बैठिए. सब हो गया. बैठिए आप बैठिए वहां. आपका प्यार मेरे सर आंखों पर बाबा. અને ગુજરાત હોય કે તમિલનાડુ હોય કે કાશ્મીર કન્યાકુમારી હોય કે આસામ હોય, જ્યાં જ્યાં ગયો મેં આવો ઉત્સાહ, આવો ઉમંગ અને આટલો બધો વિશ્વાસ અને કમિટમેન્ટ
ન 2014માં જોયું છે, ન 2019માં જોયું છે, જે હું 2024માં જોઈ રહ્યો છું. કારણ 14માં ગયો ત્યારે બધાના મનમાં હતું કે આ ભાઈ છે કોણ. ગુજરાતવાળા ઓળખે, બહાર તો બહુ કે એટલી ઓળખાણ ના હોય. 19માં ગયું ત્યારે કે આ માણસ તો કામનો છે. અને 24માં હું જોઉં છું કે ભાઈ હવે તો આપણા દેશનો દુનિયામાં ડંકો વગાડવાનો છે. મોદી સાહેબ આગળ વધો. અને જ્યાં જઈએ ત્યાં एक स्वर, फिर एक बार, फिर जब देश में जिहाद के नाम पर आतंकी हमले होते थे, तब उन आतंकियों की वकालत में सबसे पहले कांग्रेस के लोग आते थे. कश्मीर में अलगाववादी जिहादियों की मेजबानी तब के प्रधानमंत्री करते थे. तस्वीरें मौजूद है. मुंबई में आतंकी हमला हुआ 26/11 को, उसमें कसाब और दूसरे आतंकियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता आगे आए. मुंबई आतंकी हमले के जिहादियों को बचाने के लिए किताबें लिखी गई. कांग्रेस नेताओं ने उसे रिलीज किया. दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर में जिहादी आतंकवादी मारे गए तो कांग्रेस की मैडम, उनके आंखों में आंसू बह रहे थे, रुकते नहीं थे. ये कांग्रेस के नेता कह रहे. अफजल गुरु को फांसी हुई, उसे माफी दिलाने के लिए इसी इकोसिस्टम के लोग सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंच गए थे. और अब ये लोग देश में वोट जिहाद करने का नारा लगा रहे हैं. साथियों, कांग्रेस पार्टी इस समय 2 रणनीतियों पर चुनाव लड़ रही है. पहला, जाति के नाम पर समाज को बांटना. दूसरा, तुष्टीकरण के जरिए अपनी वोट बैंक को एकजुट करना. इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पहले दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर झूठी, 100% झूठी अफवाहें फैलाना, चारों तरफ चू 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 करना शुरू कर दिया. इसे चुनाव का एजेंडा बनाने की कोशिश की. और अब कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ अपने असली मकसद में जुट गई है. कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण उनसे छीनकर, उसमें से हिस्सा लेकर एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को अन्याय करके धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान परिवर्तित करना और मुसलमानों को आरक्षण देना, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं. कर्नाटका में कांग्रेस ने क्या किया? रातों रात फतवा जारी किया, एक हुक्म निकाला और कर्नाटका के जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन सबको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया. सब मुसलमान ओबीसी. कर्नाटका में जो संविधान के द्वारा 27% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को मिला था, रातों रात उसमें डाका डाला और ओबीसी समाज का जो हिस्सा था वो लूट लिया, धर्म के आधार पर आरक्षण देकर के. और जब देश का संविधान बना था
महीनों तक चर्चा हुई थी। देश के उस जमाने के कांग्रेस के आजादी के आंदोलन के दिग्गज नेताओं ने संविधान बनाया, विचार विमर्श किया, और उसमें कोई आरएसएस बीजेपी वाला नहीं था। देश के गणमान्य विद्वान थे, बाबा साहब आंबेडकर थे, और उन्होंने चर्चा करके तय किया कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बाबा साहब आंबेडकर ने विस्तार से कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण देश के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा करेगा। बाबा साहब आंबेडकर ने साफ साफ इनकार कर दिया, और देश का जो संविधान बना, वो संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए मनाही करता है। दलित, आदिवासी, ओबीसी, संविधान उसके लिए परमिशन देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात लेकर के अपनी वोट बैंक मजबूत करना चाहती है। और जब मैं कांग्रेस के इन पापों को पर्दाफाश किया, और मैं पिछले 9 दिन से मांग कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी मुझे जवाब दे, मैंने उनको चुनौती दी है। 9 दिन हो गए, कांग्रेस ने मेरी 3 चुनौतियां हैं, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। और मैं लगातार कह रहा हूं, मैं एक बार फिर मीडिया को भी जगाना चाहता हूं, देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं। एक बहुत बड़े खतरे की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं, इसलिए मैं जगाना चाहता हूं। और मेरी 3 चैलेंज क्या है? मेरा पहला चैलेंज है, क्या कांग्रेस ये लिख करके देश को देगी कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे? लिख करके दो। दूसरा, धर्म के आधार पर आरक्षण देकर दलित, आदिवासी, बख्शीपंथ, ओबीसी का हक नहीं मारा जाएगा। क्या कांग्रेस ये लिख करके देगी? तीसरा चैलेंज, क्या कांग्रेस ये लिखकर देगी कि उनकी जो राज्य सरकारें हैं, उनके जो चट्टे बट्टों की सरकारें हैं, वे ओबीसी कोटा में डाका डाल करके मुसलमानों को शामिल करने का हिडन एजेंडा नहीं चलाएंगे? इसकी गारंटी देते हैं क्या? चुप है, मतलब उनके दिमाग में, उनकी सोच में कोई खोट है। अब मुझे जामनगर के लोग बताइए, देश पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा हो, क्या मोदी चुप रह सकता है? क्या मोदी देश को फिर से बांटने दे सकता है? साथियों, मैं आज जामनगर की धरती से देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, और कांग्रेस के चट्टे बट्टे सबको कहना चाहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, इस देश को फिर से धर्म के आधार पर मैं बांटने नहीं दूंगा।